So in the physiological psychology, the psychologist studied on the basic functions or basic physiological and biological structure and function of the organism. Because without knowing the nervous system, without knowing the brain and the entire endocrine system, we cannot study the human behavior, because our behavior is controlled by the biological factors. What are the basic process of the nervous system? What is the functions of neuron? What is the basic structure and functions of the neurons? And what are the basic structure and function of the brain? Hello everyone, I am Sambit Dixit, your psychology educator. I am inviting you in our excellent coaching center, the Art Square, where we introducing various courses in the field of arts. So today we discuss about +2 psychology chapter 3, which is known as the physiological basis of behavior. ता पूर्व पिले माने मु कहि रखिबो चाहूची आम आर्ट स्क्वायर तरफ एक नूतन बैच आरंभ होबाक जाउची जहार ना रखा जाय छी कि उद्यम बैच, जहा कि मार्च 20 तारिख ठारू स्टार्ट होबाक जाउची. सो तुमे माने तळे दिया जायथवा नंबर रे कांटेक्ट करी एही बैच रे जॉइन करि परिबो. गोटे बेटर फ्यूचर पई आर्ट स्क्वायर तमान को बेटर एंड एक्सीलेंट कोचिंग प्रोवाइड करूची. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. आज हम स्टार्ट करिबा +2 फर्स्ट ईयर रो थर्ड चैप्टर जहार ना अछि द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, और वी कैन से द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. साइकोलॉजी रे पिले माने समस्तंकर मन रे आसुथबो कि आमे तो आर्ट्स नेले आमे साइकोलॉजी गोटे सब्जेक्ट भाबिथिले साइकोलॉजी नै गले, किने ता भितरे आमे जोटा को डरुथिले से दिनसटा रहि जाई छि जोटा कि साइंस. कारण जेतेबेला आमे +2 साइकोलॉजी रो किछटा चैप्टर चेंज करू बा चैप्टर पृष्ठ परिवर्तन करू, आम से देखू कि सेठी कोन गोटे डायग्राम अछि न्यूरॉन रो, किछि गोटे डायग्राम अछि ब्रेन रो. तो ए सब चैप्टर गुडा कोन साइंस रु पळै आसी कि साइकोलॉजी की? तो हां पिला माने ए सब चैप्टर साइंस रु ही आसे जोटा कि बायोलॉजी रे ही आसे. तो आमे माने जानि छे आमे गोटे प्रीवियस वीडियो रे पढिथिले what are the meaning and definition of psychology. So जो माने भी previous video देखि नाहंती तो सेमान को मैं रिक्वेस्ट करबी previous video जाई देखंतु psychology रो meaning and definition of psychology. तो हमें meaning and definition of psychology जानिले कि psychology is defined as the scientific study of human behavior and mental processes and experiences. So as we know, psychology is the science of behavior. So human behavior, it is not only considering the human behavior but also the behavior of all the organisms, including the man and animal. So behavior is very complex. We cannot study behavior without knowing the biology. So we must have read the biology. So a branch of psychology is also known as the physiological psychology. Okay, so in the physiological psychology, the psychologist studied on the basic functions or basic physiological and biological structure and function of the organism. So here they want to study what are the basic process of the nervous system, what is the functions of neuron, what is the basic structure and functions of the neurons, and what are the basic structure and function of the brain. Because without knowing the nervous system, without knowing the brain and the entire endocrine system, we cannot study the human behavior, because our behavior is controlled by the biological factors. Okay, so in this chapter we mostly focuses on the what are the structure and functions of the neuron and the entire nervous system. So as we know, the entire nervous system is consist of two important nervous system. One is the CNS and another one is the PNS. What is the CNS? The CNS refers to the central nervous system.
Okay, so central nervous system, and the PNS is refers to the peripheral nervous system. So as we know, the central nervous system is including two parts. One is your brain and another one is your spinal cord. And the peripheral nervous system is mainly controlled two systems. One is the somatic system, another one is the autonomic system, or we can say autonomic nervous system. So the autonomic nervous system is again divided into two types. One is the sympathetic division, another one is the parasympathetic division. Okay, so before knowing entire things, we first understand what is the neuron. Okay, so neurons are the basic building blocks of the nervous system. Nervous system को पढ़िबा को हेले हमु प्रथमे न्यूरॉन को पढ़िबा को पड़िबो. तो न्यूरॉन होची कोन ना, न्यूरॉन हैला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो एंटायर नर्वस सिस्टम्स रो बेसिक जिंस हला हमरो न्यूरॉन बा नर्व सेल. तो न्यूरॉन रो काम कोन पिले माने हम बॉडी रे ना, न्यूरॉन होची गोटे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग यूनिट, जहा द्वारा कि हमरो कोन ना प्रत्येक इंफॉर्मेशन बा प्रत्येक मेसेज हम बॉडी के ट्रांसमिट हेइ थाई. न्यूरॉन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स. न्यूरॉन्स द्वारा हमें गोटे इंफॉर्मेशन को पाई थाउ. पिले माने न्यूरॉन को बुझिबा को हेले हमको दुईटा जिंस को बुझिबा को पड़िबो. प्रथमतः गोटे हैला रिसेप्टर, अन्यटी हैला हमर इफेक्टर. ओके, सो न्यूरॉन हमें जानिले न्यूरॉन्स हैला कोन गोटे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स, और इट इज द ट्रांसमिटिंग यूनिट ऑफ द मेसेजेस, और हियर द मेसेजेस आर ट्रांसमिट in the various organs or various muscles or various glands of the body. So neuron को बुझिबा को हेले हमको फर्स्ट दुईटा जिंस को बुझिबा को पड़िबो. गोटे हैला कोन ना रिसेप्टर, अन्यटी होची इफेक्टर. ओके, तो रिसेप्टर पिले कहले कोन ना, हमें समस्त जानिचे, हमें 10th रे बा 9th रे भी पढिचे बायोलॉजी विषय रे. तो हमें समस्त जानिचे हमरो किछिटा स्नायु थांती. ओके, किछिटा स्नायु थांती जहा द्वारा कि हमें किछिटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करू, आउ किछिटा स्नायु थांती जहा द्वारा कि हमें किछिटा आज्ञा बा किछिटा कार्य करि थाउ. तो हमरो किछिटा अंग प्रत्यंग रहिछंती जहा द्वारा कि हमें समाज रे घटुथबा विभिन्न घटना सहित एवं हम चतुर्पार्श्व रे घटुथबा घटना सहित अवगत होई थाउ, एवं हमो किछिटा सूचना मिलि थाई. तो जेपरि कोन ना आवर रिसेप्टर्स लाइक आई, ear, nose, tongue, skin, these are the various kind of receptors. तो जहा द्वारा कि हमें किछिटा इंफॉर्मेशन बा किछिटा सूचना पाई थाउ. तो ए रिसेप्टर थ्रू रे कोन होय ना, हमें माना पु इंफॉर्मेशन ता कलेक्ट होय. तो रिसेप्टर्स आर द गेटवेज ऑफ द इंफॉर्मेशन. ओके, तो रिसेप्टर रे ही कोन ना हमें इंफॉर्मेशन पाई थाउ, एवं से इंफॉर्मेशन को कार्य करिबा पई जे हमको हेल्प करे से हेला कोन ना इफेक्टर. सपोज हमें किछि गोटे पिक्चर देखिले, किछि गोटे गीत सुनिले, तो ए जो सुनिबा देखिबा ए कामटे हमें कहा द्वारा कले रिसेप्टर द्वारा. बट इफेक्टर कोन ना, हमें से जिंसटा को देखि कि हमें ता पाखो को आकृष्ट होकि चाली की गले, बा हमें गोटे गीत सुनि कि से गीतटा कोठो आसुची बोली ताको खोजिले. इफेक्टर कोन ना, इफेक्टर हैला जोटा हमको कार्य करिबा को सक्षम कराए, बा जो जरिया रे हमें गोटे कार्य करिथाउ, जेपरि कोन ना हमर मसल्स एंड ग्लैंड्स. So without muscles and glands हमें किसी भी काम करि परिबा नहीं. So receptors and effectors are most important in the nervous system. न्यूरॉन्स चैप्टर रे हमें जानिले कोन ना इफेक्टर और रिसेप्टर रोल. तो न्यूरॉन को जानिबा कहले तार बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन को बुझिबा को पड़िबो. तो न्यूरॉन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स एंड इट इज बेसिकली इंपोर्टेंट फॉर द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग यूनिट. सो न्यूरॉन द्वारा कोन होउची ना, हमरा इंफॉर्मेशन गुडी को बा बाहरो जे इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट कलु से गुडी को हमें पास करूछु कहा पाखो को ना, हमरा सही कार्य पई जड़ित थिबा अंश को. सो जेपरि हमें किछि गोटे जिंस सुनिले बा किछि गोटे जिंस देखिले, तो सहीटा हमरा रिसेप्टर रे रिसीव हे कि हम न्यूरॉन बा सही काम पई स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन द्वारा हमरा ब्रेन को जाए, एवं ब्रेन रो हमकर इंफॉर्मेशन टिको हमर इफेक्टर पाख को पठा जाए. तो यही प्रक्रिया पूरा ऑटोमेटिक वे रे एवं इलेक्ट्रिकली वे रे होई थाई. तो न्यूरॉन रे पिले माने गोटे बेसिक स्ट्रक्चर अछि.
Okay, so neurons are different size and shapes, but it has a common structure. Okay, तेबे कौन से structure ना न्यूरॉन रे पिले माने तीन गोटी structure रही छी ता मध्यरु गोटे important बा ता भीतर प्रथमटी होउची soma or the cell body. Okay, and the second one is the dendrites, and third one is the axon, and fourth one is the terminal buttons. So first one is the soma or cell body. So soma or cell body is the enlarged head of the neuron. So soma को हमें माने पिले न्यूरॉन रो हेड बोली कहि थाउ काहे कि ना soma न्यूरॉन को कार्य करिबा परे सक्षम कराए. It helps the neuron to energize by using oxygens and nutrients. तो सोमा कौन करे पिले माने ना ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिएंट्स जरिया रे गोटे न्यूरॉन को कार्य करिया पई शक्ति जोगाई. तो सेही बोली सेति पई सोमा को न्यूरॉन रो हेड बोली तुलना करा जाई छी. Okay, so soma or the cell body is considered as the enlarged head of the neuron. The second part is the dendrite. So dendrite is basically derived from a Greek word, the dendron. Okay, so dendron is the meaning of a tree. Okay, so जेतबेला हमें dendrite को देखिबा dendrite गुडा का हमो कोन ना गोटे गच्छर जेपरि शाखा प्रशाखा बाहरी थाए ठीक सही परी सोमा ठारू हमरो जेउ सब सिरा प्रसिरा टाइप रा हमो देखा जीवो कि न्यूरॉन रो चतुर्पार्श्व रे सोमा रो चतुर्पार्श्व रे किछि गोटे ठीक गच्छ परी सदृश होउची बा गच्छर शाखा प्रशाखा परी बाहरीची तो सेटा हला हमर कोन ना डेंड्राइट. तो डेंड्राइट रे कोन देखुची हमें पिले ना डेंड्राइट रे हमें देखिबा देयर आर मेनी शॉर्टर ब्रांचेस. ओके, बहुत सारा छोटो छोटो ब्रांचेस भलिया बाहरीची तो सेगुडा कहला डेंड्राइट. न्यूरॉन रो चारि पड़े बहुत सारा छोटो छोटो ब्रांचेस भलिया बाहरीची सेगुडा कहला डेंड्राइट. जहार मुख्य काम कोन ना द डेंड्राइट्स आर रिस्पांसिबल फॉर रिसीविंग द मेसेजेस और रिसीविंग द इंपल्सेस. ओके, तो बाहर आसुथिबा जे कोनसे इंफॉर्मेशन को बा स्टिमुलस वी कैन से इंफॉर्मेशन को हमें साइकोलॉजी रे टेक्निकल वर्ड रे स्टिमुलस कहिथौ. तो से स्टिमुलस को रिसीव करिया पय जे हेल्प करे बा जे रिसीव करे से हला हमर डेंड्राइट्स. सो डेंड्राइट्स आर द मेनी शॉर्टर ब्रांचेस which extend from the cell body and which is responsible for receiving the information. Okay, so after receiving the information pass through the neuron by a longer trunk like structure. Neuron रे information टी dendrite थारु receive हला परे ता पर स्टेप रे कोन होय ना गोटे long and thin branch देखि गति करे जोटा कि हमरो कुहा जाय axon. ओके, सो थर्ड रे में जानि छै axon गोटे न्यूरॉन रो स्ट्रक्चर. तो axon कोन पिले ना axon हला गोटे सिंगल एंड लॉन्गर एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी. तो हमरो सेल बॉडी रो मेनी शॉर्टर ब्रांचेस को कुहा जाउछि कोन ना डेंड्राइट, किंतु सेही सेल बॉडी रो पर ठारू हमरो गोटे लॉन्ग सिंगल ब्रांच अछि. बस जो लॉन्ग सिंगल ब्रांच को हमें कहूचे कोन ना axon. So there are two extensions from the cell body. The many shorter extensions are called dendrites, but the single one is called the axon. So axons are the single shorter branch of the neuron which carries impulses or carries information or messages from the dendrite to the axon terminals. तो dendrite थारू information receive करी न्यूरॉन रो एंड पार्ट जहा कि रही छे टर्मिनल बटन्स से पर्यंत मेसेज को पहुंचेबार काम किए से करे ना हमरो axon. ओके, सो axon रो मुख्य भूमिका कोन ना इंफॉर्मेशन को पास आउट करिबा. तो axon जो थारु पहिले स्टार्ट हेची सोमा एवं axon रो स्टार्टिंग पॉइंट को कहा जाय axon hillock. ओके, कहा जाय axon hillock. दैट पॉइंट is known as the axon hillock point. So the axon is basically protected by some several cells. There are some several cells which protected or several we can say several coverings which are protect the axon. So amaro axon रे दुईटी टाइप रो प्रोटेक्टिंग सेल देखा जाय. गोटे हला माइलिन सेल अन्यटी होची
हमर न्यूरोलेमा तो जो सेल गुडा करे बा जो एक्सन गुडा करे माइलिन सेट थाए सेही एक्सन गुडा को कहा जाए हमर माइलिनेटेड एक्सन और जो थरे माइलिन सेट न थाए सेही एक्सन गुडा को कहा जाए बा सेही न्यूरॉन को कहा जाए ऑन माइलिनेटेड एक्सन्स और न्यूरॉन another important cell or another important covering is the neurilemma neurilemma पिला माने गोटे सब्सटेंस जोटा कि हमर न्यूरॉन को डैमेज हबा को प्रोटेक्ट करे बा डैमेज हबारो प्रोटेक्ट करे रक्षा करे जहा द्वारा कि न्यूरॉन टा कोन ना आउथरे रीजेनरेटेड हे परिबो किंतु दुखर विषय जे न्यूरोलेमाटा सब न्यूरॉन को पाखरे न थाए आमे जानि जे न्यूरॉन्स हमर एंटायर बॉडी सारा अछंती प्रत्येक पार्ट रे अछंती ओके सो न्यूरॉन रो जो न्यूरॉन गुडी को हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे थांती तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे को माने आछंती ना हमर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो जो न्यूरॉन गुडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंडर रे आसुछंती माने हमर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रे आसुछंती से गुडी करे ए न्यूरोलेमा दिनसटी न थाए बा ए जो न्यूरोलेमा कवरिंग टी न थाए किंतु सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो पार्ट को छाडी देई बा हमर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को छाडी देई अन्य सबआडे ए न्यूरोलेमा पार्ट अन्य सब न्यूरॉन रे ए न्यूरोलेमा टी थाए जहा फल के कोन हुए ना आमे जानि जे कि वंस थरे हमर जदी ब्रेन डैमेज होउची बा किछटा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होउची तो एथिरे लोकंगर कोन ना रिकवरी करबा टिके कष्ट होई जाउची okay because of this neurolema if the neurons of the brain and spinal cord is damaged then the recovery chances is very low or very less किंतु अन्य पार्ट रे जेहेतु न्यूरॉन गुडा करे न्यूरोलेमा थाए तो अन्य पार्ट रो इंफॉर्मेशन बा अन्य पार्ट रे न्यूरॉन्स गुडा को बेटर फंक्शन करंती बा आउथरे रीजेनरेटेड हेई पारंती किंतु ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रे समाने रीजेनरेटेड हेई पारंती नाही तो these are the basic about axon. So then what is the axon terminal? So the end part or the information passing through the help of axon terminals. The end part is the terminal bottoms or the axon terminals. So these are the swollen bulb like structure. Axon terminal हैला कोन पिले ना गोटे swollen bulb like structure जहा द्वारा कि information टा pass out होउची so amaro information ta kaha ko pass out hochi the information is maybe pass to another neuron or to the gland or to the muscles तो basically information ta maybe आ गोटे न्यूरॉन पाखु को जाउची बा अन्य गोटे ग्लैंड पाखु को जाउची तो जेते बेले न्यूरॉन टा रिसीव करे इंफॉर्मेशंस थ्रू द हेल्प ऑफ डेंड्राइट एंड पास आउट करे कहा थ्रू रे ना थ्रू द हेल्प ऑफ axon terminals or terminal buttons. So there are four important structures of the neuron. First one is the cell body, second the dendrite, third one is the axon and fourth one is the axon terminal or the terminal buttons. These are the basic structure. Then we go to the function. What are the basic functions of the neuron? तो देखो पिले माने न्यूरॉन रो फंक्शंस जेते के कॉम्प्लेक्स सेते के इंटरेस्टिंग न्यूरॉन्स रा फंक्शन ही समस्त टिके कंफ्यूज होंती कि सर एतरे एमती इलेक्ट्रिकल कथा को जाय छी एमती पॉजिटिव्स कोन नेगेटिव्स कोन एगुडा किछि बुझी होनी एई बडी भाबरे पिला कहंती किंतु एक्चुअली रे न्यूरॉन रा फंक्शन टा बहुत सहज एवं बहुत इंटरेस्टिंग तो न्यूरॉन देखो न्यूरॉन रो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कला बेले सब गोटे लॉ फॉलो करे से लॉ को कहा जाय फॉरवर्ड इंडक्शन लॉ ऑफ फॉरवर्ड इंडक्शन माने कोन ना इंफॉर्मेशन ता सब बेले गोटे डायरेक्शन में ही चले ता माने कोन ना इंफॉर्मेशन ता हमरो कहा ठार रिसीव है ना डेंड्राइट ठार रिसीव है इंफॉर्मेशन ता हमरो डेंड्राइट ठार रिसीव है कि हमरो एक्सॉन टर्मिनल्स पर्यंत चले ओके एक्सॉन टर्मिनल पर्यंत चले तो ये जो डायरेक्शन टा चलीला एटा सब बेले गोटे डायरेक्शन ही चलीला तो से जो गोटे डायरेक्शन रे चलीला एटा हला कोन ना हमरो लॉ ऑफ फॉरवर्ड इंडक्शन ओके किंतु हम जेतबेले तार फंक्शन को जिबा तो फंक्शन रे हम देखिबा कोन न्यूरॉन आ गोटे भी दिनस लॉ आ गोटे भी लॉ फॉलो करूची जार ना हला कोन ना ऑल और नॉन लॉ ओके सो बेसिकली
न्यूरन रे दुईटा फंक्शन रही गोटे है कौन ना दुईटा नेचर ऊपर डिपेंड करछि फर्स्ट वन कौन ना गोटे है द कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरन एंड अनदर वन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरन ओके कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरन व्हिच इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर and communication between the neuron which is basically chemical in the nature. So we can say the functions of the neuron is both electrical and chemical, that means electrochemical in nature. Okay, so neuron ର functions पिले माने electrochemical. electrochemical कोन पाई ना गोटे वायर जेमती इलेक्ट्रिक पास करे बा आमे गोटे तार साहाय्य जेतेबेले विद्युत संयम दउ तो विद्युत टी कोन होइना तत्क्षणात तार मध्ये नै प्रभावित होई ठीक सेही बळी जेतेबेले गोटे इन्फॉर्मेशन पिले आसे तो से इन्फॉर्मेशन टा आमे समस्त हम डे टू डे लाइफ रे देखिथिबा जे कोनसी भी गोटे इन्फॉर्मेशन आसे सपोज हम हाथ को मस्सा टी कामुडिला तो जेतेबेले आमे देखिले मस्सा टी कामुडिला तो सडन हमर इन्फॉर्मेशन टा कोन ना जाय कि ब्रेन पाखरे पहुंचिला एवं ब्रेन रो कोन होला ना सडन इन्फॉर्मेशन आसे कि हमर इफेक्टर ऑर्गन बा हमर मसल्स ग्लैंड्स पाखरे पहुंचिला एवं हम अन्य हाथटी जाई मस्ता बसिथिबा पार्श्व रे बाजिला तो ए जो प्रोसेस टा हमें समस्ते 9th रे पढिचे बा 10th रे पढिचे सब दिनस तो इटा हमर कोन ना दुईटी स्नायु रो काम गोटे हला आज्ञाबाही स्नायु आ गोटे हला संज्ञाबाही स्नायु बा संज्ञाबाही स्नायु अन्यटी होची आज्ञाबाही स्नायु तो मस्सा कामुडिबा बेले हमें देखिले जे हमको इंफॉर्मेशन टी देला से हला हमर सेंसरी न्यूरॉन एवं जे एक्शन नेला से हला हमर मोटर न्यूरॉन सो ए सब जो प्रोसेस चलिला एटा कोन ना बहुत स्पीड बा इलेक्ट्रिकली नेचर चला ता माने कोन ना गोटे इंफॉर्मेशन जेतबेले पास करे थ्रू द बॉडी व्हिच इज इलेक्ट्रिकल इन द नेचर विद इन द न्यूरॉन but in the case of between neuron there are two neurons is present or one is neuron another one is the other gland or effectors so first we understand what is the electrical functions or what is the communication within the neuron so I hope video टी भलो लागि थिबो जदि वीडियो टी भलो लागि छि आपण माने लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिवे जदि किछि डाउट थाए आपण माने कमेंट सेक्शन रे जणैबे नेक्स्ट चैप्टर रे हमें पुणी आपन सहित जो जोड़ी होबो थैंक यू।